we study graphical method. Graphical method for solution of LPP. It is also known as search approach method or search approach solution. ग्राफिकल मेथड में हम लोग ग्राफ्स का यूज करेंगे जिससे एक डायग्राम बनेगा, ग्राफ बनेगा और हमें अपने सॉल्यूशंस मिलेंगे. ग्राफिकल मेथड is mainly applicable only on two variables linear programming problems, and it has 6 steps. There are 6 steps in graphical method to solve an LPP. In first step, we have to identify the problem, its decision variables, its objective functions, its restriction. After that, we have to formulate a mathematical form of the LPP. After that, we have to plot graph on graph paper using these constants subject to constant inequalities and identify the feasible reason. After plotting the graph by using constants, we get a feasible reason. This feasible reason is created by the intersection points of different lines created by these constants. मतलब कि जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ को, ग्राफ बना देंगे उन कॉन्स्टेंट्स को यूज कर तो वो कॉन्स्टेंट्स कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइंस बना रहे होंगे और उन स्ट्रेट लाइंस का आपस में इंटरसेक्शन हो रहा होगा और एक बाउंडेड या अनबाउंडेड रीजन बन जाएगा और उस रीजन को बोलेंगे हम फिजिबल रीजन. द फिजिबल रीजन obtained in step 3 may be bounded or unbounded. Compute the coordinates of all the corner points of the feasible region. अब ये जो feasible region बना उसमें coordinates बन रहे होंगे, points बन रहे होंगे. उन points के coordinates लेंगे हम, read करेंगे. अब वो read करने के बाद उन points को हम put कर देंगे objective function के अंदर. अब objective function से different outputs निकलेंगे. अब उन आउटपुट्स पे हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन मिनिमाइजेशन के लिए था या मैक्सिमाइजेशन के. अगर मिनिमाइजेशन के लिए था तो वो जो सबसे कम वैल्यू उनमें से आ रही होगी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की, वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा. अगर मैक्सिमाइजेशन के लिए होगा तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी ऑप्टिमल वैल्यू होगी. बाय दिस मेथड वी गेट सम फिजिबल सॉल्यूशंस. आफ्टर दैट वी हैव टू चूज आवर main optimum solution from that feasible values. तो जो हमारे feasible solutions वहां से हमें मिले उन सब में से हमें अपना जो main objective function के according जो हमारा optimal solution था उसे choose कर लेंगे. इस मेथड को हम समझेंगे अभी एक एग्जाम्पल के साथ. तो अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं इस मेथड को. Here is an LPP. स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स को नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जब हम LPPs की या OR में बात करते हैं तो बहुत लेंदी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं कि अगर मैं इसको वर्ड प्रॉब्लम को यहाँ लिखूंगा तो आई थिंक एक बार में तो इन वन टाइम मेरे को यहाँ पे पूरी एक LPP ही लिखनी पड़ेगी, एक प्रॉब्लम ही लिखनी पड़ेगी. तो इसीलिए मैं उसको एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर आपके पास ले आता हूँ और फिर इसको सॉल्व करते हैं. Now, a company produces two type of belt of type A and belt B or type B. And A is superior quality and B is lower quality. Belt A requires twice time as compared to type B for manufacturing.
टाइप बी को बनने में दुगना समय लगता है टाइप बी से, और टोटल जो टाइम अवेलेबल है वो 1000 मिनट्स का अवेलेबल है. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. एंड leather to produce these two type of belt, equal leather is required for both, and 800 quantity of leather is available. Type A belt requires a buckle A, and these are available 400, and B type requires a buckle B, and these are available 700. On belt A, company makes a profit of 4 rupees on per piece, and on belt B, company makes a profit of 3 rupees. Now company wants to maximize its profit. First of all, formulate its mathematical form. This is second step. First step we have to decide decision variable. As we see, we have to compare two products A and B, and these are the available resources or restrictions. Hence our decision variable x1 is for belt A and x2 is for belt B. Now this question is for maximization of profit. Hence objective function is max z equals to 4x1 plus 3x2 subject to constants. First one is for time, 2x1 plus x2 less than equals to 1000. It is maximally available for 1000 minutes, hence it is less than equal to 1000. Second leather, x1 plus x2 less than equals to 800, x1 less than equals to 400, and x2 less than equals to 700. This is the mathematical formulation of the question. x1 x2 greater than equal to 0. This is non-negative condition. Now we have to find the solution. For plotting graph, we require coordinates of each equation. So we take it as equation, and on for equation 1, when we put x1 equals to 0, it will give x2 equals to 1000, and when we put x2 equals to 0, it will give x1 equals to 500. So coordinates are 0, 1000 and 500, 0 for equation 2. ये first, and this one is second, and this one is third, and this one is fourth. Now from second, when we put x1 equals to 0, x2 equals to 800. When we put x2 equals to 0, we get x1 equals to 800. The coordinates are 0, 800 and 800, 0. From equation third, we get x1 equals to 400, and from equation 4 we get x2 equals to 800. These are the coordinates when we find this. In this we take coordinate 400, 0, and in this 0, 800. These are the coordinates. Now we have to plot a graph. Now I write this maximized function here, objective function
here and remove this part. Now we get the coordinates of all the equations. Now for equation 1 we have first coordinate 0 1000, so 0 on x1 and 1000 on x2. X2 is here, 1000, mark a point. Next for second coordinate 500 and 0, so 500 is here and 0 is here. So for first inequality we get 2 points. Make these 2 points using a straight line. Straight line हम लोग तो यहाँ पर बेटा बिना स्केल के कर रहे हैं, आप लोग स्केल को यूज कीजिए प्लीज। ठीक, तो ये फर्स्ट इक्वालिटी की इक्वेशन आ गई। सेकंड, फॉर सेकंड इक्वेशन 0 800, तो 0 is here and 800 is here. For second point 800 and 0, that is here. Again using a scale meet these 2 points. Here you show see intersection is found. हाँ, नेक्स्ट जब ऐसी कंडीशन हमारे सामने हो कि जब एक ही कोऑर्डिनेट होगा तब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेंगे 400 0, 400 इज एट x1, x1 इज हियर, दिस इज 400 एंड दिस इज द मार्क। तब हम एक स्ट्रेट लाइन यहीं खींच देंगे, क्योंकि हम पर दूसरा पॉइंट नहीं है कि जिसको मिला के हम एक स्ट्रेट लाइन खींचें। जब नहीं है तब हम क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन यहीं पर ड्रॉ कर देंगे इन दिस मैनर। अगेन फॉर इक्वेशन 4 0 800, 0 is here and 800 is here, तो ये पॉइंट यहाँ पर। It is not 800 in the question, it is 700. So this line is not here, it is here. Okay, now we found a feasible reason where 0 को हमने O point दे दिया, this is our A point and this is our B point, this intersection is C point, this intersection is D point and this is E point. This is our feasible reason. This is our feasible reason. जब इस तरीके से हमें फिजिबल रीजन मिल जाएगा और ये कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे O A B C D is our feasible reason, और O A B C D E सभी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। O का कोऑर्डिनेट रहेगा 0 0, A का कोऑर्डिनेट रहेगा A here and this is 400 0. B is 400 and some 200. And C is 200 600, D is 100 700 and E is 700. These are the points or say feasible solutions for the problem. Now we will put these coordinates in function z. जब हम इसको फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z में पुट करेंगे इन वैल्यूज को, तब क्या होगा, मैक्स z इज 4x1 प्लस 3x2, तो 4
4 into 0 plus 3 into 0 equals to 0. 400, 4 into 400 plus 3 into 0 equals to 1600. 4 into 400 plus 2 into 200, 3 into 200 equals to 16 or 6, 2200. 4 into 200 plus 3 into 600, it will equals to 2600. 4 into 100 plus 3 into 700, it will equals to 400 plus 2100, 2500. 4 into 0 plus 3 into 700, it will equals to 2100. Here we see when we put these values of decision variables in a objective function, we got these feasible solutions. We have to opt the optimal solution from these feasible solutions. We know this question is for maximization of profit. Hence, we have to choose the maximum value from these feasible solutions. So, we have 2600 is our maximum value. Hence, we say that the company should produce or manufacture 200 units of type A belt and 600 units of type B belts. So, to obtain maximum profit. We know that, or we remember, total time available is 1000 minutes and type A requires 2 minutes and type B requires 1 minute. From this, the first constant 2 minutes and 1 minute for A and B, we have practical approach is 400 minutes in this, and for 200 pieces 400 minutes, and for 600 pieces 600 minutes, 1000 minutes. First condition is satisfied. Second, lather availability. Lather is equally required for both the beds. Hence, 200 units and 600 units equals to 800. That means second condition is also satisfied. Third condition is buckles for belt A is only 400 available and quantity of A is 200, that is also meet. And for B, buckles are 600 required and available are 700. Condition is also satisfied and both values are non-negative. Hence, we say that this is the optimal feasible solution, क्योंकि यहाँ पर जो भी conditions थी सबको ये follow करता हुआ चल रहा है. तो हमारे को क्या करना है, A की जो बेल्ट A है उसकी 200 पीसेस को मैन्युफैक्चर करना है और टाइप B जो है उसके लिए 600 पीसेस. This is the solution or graphical solution of an LPP. In next class, we will discuss another question related to graphical method.